Okay, so been on about AI. AI is doing this, AI is doing that. The problem where it lies and where I'm the most concerned about is our preparedness and our preparedness to tackle problems when the problems arise. So let me share two examples where problems either arose that we knew that will come, or we developed them and they came forward. Problem one, that's the most recent one, so I'll start with this. SARS struck made about 2001 2002. SARS strikes in China, causes, I think 2003. SARS strikes in 2003 in China and causes mass shutdowns and everything of everything, and that was known as CoV-1, the CoV-1, COVID-1 virus. Right? COVID is a kind of viruses, and CoV-1 was SARS. So SARS struck and everything was shut down. A lot of rumors went about how they tackled it, how it was dealt, but it was a deadly virus. It was the first recent history epidemic or pandemic that was spread across the globe, almost the whole globe. And wherever it did go, devastation was caused and shutdown was there, and we noted that. So we saw this. We developed something called the International Health Regulations. This was done by WHO. Those were done. Those were given to nations, and well, they were developed so rigidly, so promptly, so nicely. The rules and everything that was developed was done so rigorously that had we followed them, let me take you back. 2006 article pops up in Dawn. I'll share that article with you too. Maybe the link is here in the video. So article pops up in Dawn, warning everyone, and this is Dawn, Karachi, Pakistan. Dawn article pops up that COVID might strike again, CoV-2 might come, coronavirus might come. By name, it's mentioned over there, and we need to be prepared. And this was not only in Pakistan; this was done globally as well by many people. But what happened? Nations preferred ease of finance, ease of consumers, ease of transactions, rather than having checkpoints, health checkpoints, or done things that were required by international health regulations back then. And the result is in front of us. Had that law, had those regulations been in place properly throughout the whole of the world, whole of the globe, we would not have faced this. Second point. In this second point, when it struck, were we prepared for it? Did we know how to deal with it? Millions of PhDs that roll out, I'm saying millions in a figurative manner, millions of PhDs that roll out in the field of medicine in numerous fields, हजारों बंदे आपको मिलते हैं जिसने PhD किया हुआ होता है इसके अंदर. क्या वो इसकी सोल्यूशन निकालने के केपेबल थे या इसको सॉल्व करने केपेबल थे? मेरे ख्याल से नहीं थे. आई थिंक 8 साल पहले बिल गेट्स की टेड टॉक भी आई थी जिसपे उसने कहा था यार epidemic might strike, and that's the biggest cause of concern to him that can threaten humanity in a big manner. We need to do something about it. Did we? We didn't, because we are preferring our commerce ease or ease of consumers based upon ease of consumers, and that's what we based our decisions upon, rather than pulling them onto things that could have actually enabled us or helped us solve a crisis before it came. Okay, same thing, alright? Bear with me for the second one too. I think it was in the 40s, maybe. My dates are not very good. Thomas Midgley, the man that solved the problem of engine knocking by using leaded fuel. So the brilliant guy, I don't know, I should be calling him brilliant or not. But what he did was he developed lead fuel. He added lead additives to the fuel. Lead ethyl he called it, which was not actually lead ethyl, but well, anyway, he called it, and he gave us leaded fuel. सब फ्यूल में उसने lead ऐड किया ताकि वो इंजन लॉक ना करे, और उसके बाद वो हमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ सारा फ्यूल. हम लोगों ने यूज़ किया, 10 जगह वो चला और सब कुछ सेट था, जब तक डिस्कवर नहीं हुआ कि ये फ्यूल जो है लेड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है. और लेड पॉइजनिंग की वजह से हो क्या रहा है कि एक तो ह्यूमन IQ, बच्चों की जो IQ है, डेवलपमेंट है, वो गिर रही है बाय अ मैसिव परसेंटेज,
जो अलाउड फिगर्स हैं वो 0 की हैं और यहाँ 100 पे पहुंचे हुए थे। 5% एक ज़माने में कहते थे, अब आई थिंक 0 पर है वो, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। तो लेड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है। लेड पॉइजनिंग इसके बाद क्या कॉज कर रहा है, देर इज अ कन्फर्म स्टडी दैट दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड, इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया किसके अंदर, बिहेवियरल चेंजेस के अंदर, लोगों के अंदर। सो क्राइम रेट्स ग्लोबली अराउंड द टाइम दैट लेड फ्यूल वाज अराउंड रोज, ठीक है, दे रोज मैसिवली एंड बिल्कुल कोरिलेशन में ग्राफ है आपका, जो आपका लेड पॉइजनिंग का मिलता है और उसका मिलता है साथ, ठीक है। रिसेंटली आई थिंक कपल ऑफ इयर्स बैक लेड फ्यूल इस्तेमाल करना हमने बंद किया है। तो डेथ्स वर कॉज्ड बाय दिस, IQ ड्रॉप्स वर कॉज्ड बाय दिस, और हमारे साथ और क्या हो रहा था, हमारे साथ बिहेवियरल चेंजेस हो रहे थे, क्राइम रेट्स बढ़ रहे थे। दिस वाज, वी ऑल वर अफेक्टेड बाय इट। रिसेंटली डिस्कवर हुआ कि जी हमने सोल्यूशन निकाला था, असल में वो सोल्यूशन ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, तो वी नीड टू गो टू समथिंग एल्स। अगेन commercial preference was given over this. There was, back to him even, there was a easier solution, sorry, a more expensive but a better solution available to him, which was not opted for. Why? Because it was not economically viable. हम लोग as a nation कह रहा हूँ, as a race, we prefer things which are easier to manage, cheaper to afford, and that's my point when it comes to, when I say कि we make decisions based upon, a lot of decisions are made, I'm not saying all decisions, but a lot of decisions are based upon pure human greed. देखो, अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज़ को डिमांड करेगा ना, तो कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट में उसको प्रोवाइड की जाएगी वो चीज़। अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ कि यार ये जो चाय का कप है ये बड़ा हो, तो बड़ा बनाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ख़रीदने के लिए मैं जाऊँगा मार्केट के अंदर। और अगर मैं डिमांड करूँगा यार ये चाय का कप छोटा हो, तो छोटा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन माई डिमांड। तो जब मैं डिमांड करूँगा यार मुझे ईज़ दो इस चीज़ के साथ, तो वो मुझे ईज़ दी जाएगी रादर देन मेरी सेफ्टी को केटर फॉर किया जाए, क्योंकि देखो उसके लिए उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है इस काम के अंदर। अब रिसेंट टाइम्स में जो हमारा डेवलपमेंट चल रही है, जिसके बारे में बात मैं कर रहा हूँ, उस पर आता हूँ नाउ। अब ये दो एग्जांपल्स आप दिमाग में रखें और अब आप ले आए AI के ऊपर इस कहानी को। हमारा एकेडेमिया इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वी डू नॉट प्रिपेयर आवरसेल्व्स, इन माय व्यू वी डू नॉट प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स, आवर एकेडमिक्स इन अ मैनर, हम लोग जहाँ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डील कर सकें। अच्छा, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री ओनली। हम लोग ग्लोबल में हम लोग डील कर सकें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। वी प्योरली फोकस ऑन अटेनमेंट टारगेट्स विच इज सेट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो करके मैं पेपर मेरा पास हो जाएगा, या मेरी PhD का जो भी हमारा रिसर्च वो थीसिस वो निकल जाएगा। लुक एट द नंबर ऑफ PhDs दैट आर देयर and look at the number of real term human development that is there. कोरिलेट करती है अगर ये बात, तो आप मुझे बता दें कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास इस तरह के आ रहे हैं जो रियल ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। रिसर्च पेपर्स कितने आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और उसका ट्रू रिफ्लेक्शन इन आवर लाइव्स, बेटरमेंट ऑफ आवर लाइव्स कहाँ तक पहुँची है। तो कहने का मकसद है मेरे व्यू में वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। वी आर फोकस्ड अपॉन बीटिंग द सिस्टम बना दिया गया ना PhD करने का। वी आर फोकस्ड अपॉन बीटिंग द सिस्टम रादर देन लर्निंग फ्रॉम द सिस्टम एंड बिहेविंग ऑन इट। सही, इजियर वे आउट, राइट। और जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्ट्राइक करते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कोविड का, कोविड स्ट्राइक करते हैं, वी आर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। नाउ दिस AI, the brilliant tool that it is, and I'm again saying it's a brilliant tool that will augment, that will enhance our capabilities, it will extend us as human beings, सही है, but intelligent human beings, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, जिनको जितना केपेबल आप होंगे उतना आप उसको बेहतर यूज कर सकेंगे। जो आपसे आपकी कैपेबिलिटीज जहां आपकी ड्रॉप कर रही होंगी, जहां लैक कर रही होंगी, वहां ये आपको फ्लश आउट कर देगा, बिकॉज आपको रिप्लेस कर देगा। नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट रिप्लेस यू, यू विल बी रिप्लेस बाय अनदर ह्यूमन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो नाउ the fact that this thing is picking up its own brain, ठीक है, it is developing itself, और हम वेट कर रहे हैं कि सेंटिएंट होगा ये।
क्या ये सेंटिएंट होगा? क्या हमारा जो वो है रिफ्लेक्शन, इस पे मैं एक सेकेंड में आता हूँ, लेकिन क्या ये सेंटिएंट होगा? हम लोग सेंटिएंट होने का इसका वेट करें, सेंटिएंट होगा, ये इंटेलिजेंट हो रहा है दिन ब दिन, दिन ब दिन इट्स पिकिंग अप न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स दैट वी ourselves cannot predict that it's picking up. अब जब ये हमें कोई ऐसा चैलेंज पोज करता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, सही है, जो हमारे लिए नया होगा, क्या हमारी इंटेलिजेंस विच इज़ ट्रू इंटेलिजेंस विच इज़ नोन टू डील विद और प्रॉब्लम विच डू नॉट हैव वी हैव नॉट बीन ट्रेन फॉर बिफोर, ठीक है, दिस इज़ अगेन ये जो अभी तक हमारे दिमाग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है कि यार ये इट्स अ प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ताकि ये जो इसको पहले डेटा दिया जाता है उसके पैटर्न बिहेव करके स्टैटिस्टिकली व्हाट्स द बेस्ट रिजल्ट ये आगे उस पर बात करता है, तो ये नए पैटर्न को पिक नहीं कर सकता। ये हमारे लिए जब कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो हमारे लिए ब्रांड न्यू होगी, और हमारी इंटेलिजेंस क्वेश्चन यही हमें क्या बताता है कि वी आर मोर इंटेलिजेंट, वाई? बिकॉज वी कैन पिक पैटर्न्स जो हमारे नए भी होते हैं, वी कैन मेक एसोसिएट थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली न्यू टू अस एज वेल, एंड वी कैन सॉल्व दिस। हैविंग सेड दिस, when push comes to shove, have we been lately able to do so? So yeah, this is a complicated problem because this has never been dealt with by humans before. Epidemics आई हैं, artificial intelligence पहले नहीं आई, let's just call it aliens पहले नहीं आए, ठीक है, और हमारा अभी तक कॉन्सेप्ट जो अटका हुआ है वो ये अटका हुआ है कि जी ये रोबोट्स बनाएगा हमारी तरह के जो 2 पाँव पे चल रहे होंगे, एब्सोल्युटली मैट्रिक्स एंड टर्मिनेटर वाला सिनेरियो होगा और ये आएगा। इट्स नॉट नीड टू डू दिस, ये हमारे ईगो हमें बोलता है। हम अपने ईगो के अराउंड बहुत सारी चीज़ें बेस करते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ रिलीजन्स में गॉड का इमेज जो है ना वो भी उन्होंने इंसान बना दिया। The entity that created the universe, no, it will have 2 eyes, hair and body like us, because I mean we are egoistic beings, right? तो गोरे साहब ने दुनिया फतह की तो उन्होंने कहा यार ये जो मिडिल ईस्टर्न प्रॉफिट है, ये जीसस जो है पीस बी अपॉन हिम, इनको गोरा करो क्योंकि ये तो गोरे होते हैं, ये तो नहीं हो सकते, ब्राउन तो नहीं हो सकते, ये तो हम गोरे हैं तो ये भी गोरे होंगे। हमारा ईगो है ये, ठीक है, वी कन्वर्ट थिंग्स इनटू आवर ओन रेजिडुअल इमेजेस एंड वी से कि यार ये जो चीज़ है ना ये हमें आगे लेके ये इस तरह करेगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इमोशंस होल्ड करेगी, ये हमारी तरह सोचेगी, हमारी तरह करेगी। इट डज नॉट नीड टू बिहेव लाइक ह्यूमंस, इट इज़ नॉट ह्यूमन, सही है, इट डज नॉट नीड टू बिहेव इन द सेम रूल्स एंड फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी डू इन आवर थिंकिंग और अप्रोच प्रॉब्लम्स। इफ इट स्केल्स टू द लेवल that it is going to scale to without our controls that we need to set in, सही है। रिसेंटली चैट जीपीटी पे इन लोगों ने जो रिस्ट्रेंट्स लगाना शुरू करी हैं उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर गई है। गूगल के जो फाउंडर हैं वो वापस आ गए हैं इन द ट्रू स्टाइल सिमिलर टू स्टीव जॉब्स, ये जी गूगल इज़ इन पेरिल, तो मैं जो हूँ उसको सॉल्व करवाता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ और मैं करूँगा, और हमारा जो एआई अप्रोच है वो अग्रेसिव इनफ नहीं है, तो ये सेफ्टीज हटाओ, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अगेन ह्यूमन ग्रीड, मीटिंग द कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर डिमांड है वो मीट करने के लिए वी विल और वी माइट जस्ट लॉन्च इनटू अ प्रोडक्ट इनटू द मार्केट दैट is not configured to the securities that it should be configured to, and when that product raises problems that we have not dealt with before, will we be able to pick up those patterns and provide solutions based upon our academic workings? It's a tough question and I hope we do, because there is no switching off AI. It's here to stay. And no matter what we do, like I said, it's our nature by which it will grow. देखें, इससे पहले जो हमें एक्सिस्टेंशियल थ्रेट थी ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब से थी, सो ये ओपनहाइमर बड़ी पॉपुलर है आजकल।
nuclear bomb was the biggest threat to humanity when it was exploded in Hiroshima, Nagasaki, and the world saw that unfortunate destruction. Um, that could not be replicated in anyone's basement. You needed a nuclear reactor, you could build in controls, and we did. And we stopped nuclear proliferation, and it remained to the limited number of countries that it is in. Will we be able to stop AI development? Now, there is a move called Petals. Petals is a torrent to torrent based system which bases AI in small segments. AI के जो स्मॉल सेगमेंट में वो बेस करवाता है डिफरेंट पीसीस के अंदर, और किसी भी डिवाइस पे आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिस तरह ये है ना चैट जीपीटी, ये क्लोज लैंग्वेज मॉडल है, भाई ये ओपन है, इसका डेटा लॉक हुआ हुआ है, ओपन में आप चीज़ें मज़ीद हिला सकते हैं, करा सकते हैं, कैन रन ऑन एनी डिवाइस. ठीक है, वी डू नॉट नीड अ बिग ह्यूज कंप्यूटर फॉर इट एंड मोर. You can probably install it in your own company even. So what's a rogue group stopping, क्या नाम है, they're stopping a rogue group from launching something against someone. ठीक है, कंट्रोल्स तो नहीं है, जो डेवलपर्स हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, चले वो रोग वाले नहीं इंटेलिजेंट हुए, लेकिन वो बना के तो दे सकते हैं ना, प्रोडक्ट तो मार्केट में आ गया. और जिस स्पेस में हम डील कर रहे होंगे इस चीज़ को, वो स्पेस विल बी ऑल एम्पावरिंग टू ह्यूमंस इन द फ्यूचर. And this is my 2 cents on it, that all those sci-fi films that you've seen in the number of years, a lot of them are about to come true. ठीक है, हम लोग थोड़ा वर्क फ्रॉम होम एंड देन एक्सटेंडेड वर्क फ्रॉम होम पे जाने वाले हैं. आपका जो क्या नाम है, विजन प्रो वगैरह जो भी आपके ग्लासेस आ रहे हैं, या ग्लासेस जो नए रन में आ रहे हैं, एक ग्लासेस कह रहा हूँ, वीआर ग्लासेस जो हमारे नए रन में आ रहे हैं, वो आपको इनेबल कर रहे हैं टू एंटर इनटू वर्ल्ड्स, एंटर इनटू प्लेसेस इन अ रियल वर्ल्ड फील. ठीक है, ग्राफिक जनरेशन विल बी बेटर इन क्लाउड. You will be able to interact with people very realistically in your own space, which who are not there, जिसका खाली virtual reality virtual reality जो है वो नज़र आ रही है. बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको we take it very lightly. Same is the case, we take artificial intelligence very lightly. Virtual reality यानी fake reality, I mean what the hell. So there's someone who's there, who's talking to us. It may be so that we are sitting in a class, the teacher is walking about, your head is turning and looking, the teacher walk by, and the teacher is somewhere far away in some campus, some classroom, teaching over there, looking at students who are not there, who are virtually there, and the students are sitting in their home looking at the teacher who is virtually there and interacting. The teacher may be teaching in Italian, the student may be listening to it in Mandarin, and real world artificial intelligence utilization से उसकी ट्रांसलेशन हो रही होगी, और उसको बिल्कुल उसकी आवाज़ में. अगर किसी को इस पर वैसे डाउट है तो यूमेन जो है ना, एक कंपनी को लुकअप कर लेना, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड कि वो आपकी अपनी आवाज़ में, आपकी टोनैलिटी में आपकी आवाज़ को पिच आउट करता है. तो दीज थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग इज देयर, these technologies are here and they're about to impact our lives very quickly, in a good way, in a bad way, that remains to be seen. All I'm saying is that we need to be aware of this, we need to be prepared for this, we need to study, truly study. जो चीज़ों की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनको उसको देखना पड़ेगा. हमें सुपरफिशियल चीज़ों से हटना पड़ेगा एज अ रेस. I think that is the only solution that we have towards truly developing ourselves, not only as क्या नाम है academics, not only as problem solvers, but also I think human beings, also Muslims for that matter. Go back to the true meaning of things, and जो basics जहाँ base lie करता है, जहाँ वो lie करता है, जो वो चीज़ है, अगर उसको हम लोग ones and zeros में break down कर दें, जो कि क्वांटम वंस एंड जीरोस का टर्म भी जो बाइनरी टर्म है, क्वांटम कंप्यूटिंग रिप्लेस करेगा, अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे. बट ब्रेक डाउन कर दें तो हमें जो उसकी जो चीज़ें हैं ना,
बड़ी विविडली नज़र आना शुरू हो जाती है. एंड दैट्स आई थिंक समथिंग दैट वी शुड see and do when we should break down things to ones and zeros and see how things and where things lie. And if a tough call is required, we should take the tough call, because I mean, you will not let your child jump off the bed because you're lazy enough to not get up from the bed and hold the child. अगर वो क्रॉल करके बेड के कोने तक चला गया तो आप उसको पकड़ लोगे, आप उसको जंप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपको पता है उसको नुकसान होगा. तो अगर हमें पता है कि हमें नुकसान होगा तो हमें शायद अपने आप को थोड़ी रिस्ट्रेंट में लेके चले जाना चाहिए. अगर रिस्ट्रेंट में नहीं भी लेके जाएं तो एटलीस्ट हमारा जो इम्प्लिकेशन उसकी है उसको हम मॉनिटर कर लें कि फाइन, ओके, व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स जस्ट डेवलप एट द सेम पेस एज वी आर, बट बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू वट एवर एक्सटेंट वी कैन बी. एंड दैट मे अलाउ us to create the solutions that probably I can't think of right now, or many can't think of right now. So it's a brilliant tool. It's augmentation of human expertise, skills that is coming our way. A lot will change. A lot will change. There's a lot may go out, a lot may come in. And again, to bring a lot in, भी इसका एक इकोनॉमिक सिनेरियो भी जो है, जब बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस होना शुरू होंगी तो हमें नई चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, नई जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी. क्या हम इतने कैपेबल हैं अभी, या इतने कैपेबल अभी हमारी क्या फ्यूचर में हम लोग हो रहे हैं कि हम वो नई जॉब्स को क्रिएट कर सकें? जो वो नई जॉब्स होंगी उनसे नए इकोनॉमिक सिनेरियोज क्रिएट होने, और जो लोग उस रोल से माइनस आउट हो रहे होंगे, जो ये इवॉल्व करेगा, या वो ह्यूमन रिप्लेस करेगा जो इन टूल से इनेबल्ड होगा, तो क्या उन लोगों को कहाँ हमने लेके जाना, उन लोगों के लिए क्या करना है, क्या सोचना है. दिस वी नीड टू थिंक ऑफ the controls and the protocols that we need to engage for AI. That's one scenario, but the real world human scenario is there as well, that we need to think of how to utilize the numbers that we have right now into a proper futuristic workforce. So these guys, when they are in a workforce or they are business enablers, I mean, I'm not saying get employment, but do your own business even, but ये इतने enabled हों कि they are able to afford an easy living for their families and manage economics of their households or their countries or whatever, ताकि जो again जो existential अभी हमारा जो crisis आ रहा है, या शायद सही वर्ड नहीं कैसे इस्तेमाल करना, जो ट्रांजिशन अभी आ रही है, जो चेंज अभी आ रहा है, वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट करता है, उसके लिए आई थिंक वी नीड टू सीरियसली sit down, and again, if we are academically competent enough, we will figure things out. So my 2 cents are, let's focus on our academia, let's focus on our intelligence, true intelligence, and come to the point where we can truly give solutions to problems or questions that are raised or will be raised in the future.